Good morning students, welcome back to your online sessions of Mathematics class 10th having a syllabus of NCERT. I hope you and your family will be safe in the pandemic situation, so just avoid to go outside your home unnecessary. If it should be necessary, then you have to go out by using a protective mask of layer, using the sanitizers, and when you are at home just wash your hands within a 3 to 4 hours within a 20 seconds. So stay home and stay safe. Just for discussing about the topic in which we have to discussing into the previous classes, that is the arithmetic progression. In the previous class of arithmetic progression, we just discussing about how we can find the different formulas, like if we want to find out the nth term, then what are the formula, like a of n is equal to a plus n minus 1 into d. If there is a part of sum of n, then s of n is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Also s of n is equal to n by 2 a plus l. If the term of n we have to find out, that is s of n minus s of n minus 1. These are the different formulas that we have to find out. Also we have to check it out if the particular sequence is in arithmetic progression. Is it in arithmetic progression? Then how it can be find? Generally, if the particular value having a two terms is a non-constant 0, then it should be arithmetic progression. So constant, the discriminant, the difference between the two terms always be constant, then it should be a part of the arithmetic progression. So that generally in the previous concept discussing about how we can find the common difference, how we can find the nth term, how we can find the most of the 4 terms of the arithmetic progression, in which a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d up to a plus n minus 1 into d. This type of general prescriptions we have to find out as a terms of arithmetic progression. Now today let me move slightly ahead, which is generally in your textbook page number 105. It is based on exercise 5.2. in which there is a table is given in which different type of values like a, d, n and a of n is given, and some of the value is in the form of missing. So that missing value we have to find out. Okay. So let us moving on to the first question. In the first question, a is given, a is equal to 7, d is equal to 3, n is equal to n, then we find out the a of n, right? So in the first question, a is given, d is given, n is given. So a of n that you have to find out, right? So a is given 8, 7 and 3, right? A is given as a part of this type of formula is applied. So we have to find out, like slightly change in a question, 7, 3 and 8. Right now my mistake is there. In the question is 7, 3 and 8, right? So a is equal to 7, d equal to 3, n equal to 8. So we have to find out a of n. How we can we find a of n? So generally there is a formula to find out a of n. So a of n is equal to a plus n minus 1 into d, right? A of n is equal to what? A plus in bracket a minus 1 into d. That is the general formula to a of n. Now a of n that we have to find out, a is equal to 7 plus n minus 1, n is what? 8, 8 minus 1 into d is equal to what? D is equal to 3, common difference, d for the common difference, that is d is equal to 3. So therefore 7 plus 8 minus 1, 7, 7 into 3, 7 into 3. So 7 plus 7 3 is 21. So a of n is equal to what? 28. So you'll get easily a of n equal to 28. Now slightly we move on to the second questions, where a is equal to given minus 18. Second question, a is equal to minus 18. So there is also formulas, the d that you have to find out, n is equal to 10. N is equal to 10, a of n is given, and d you have to find out, right? So a of n is what? A of n is a 0. So how we can find the value of d? D हमें find out करना है. So we have to use the same formula. If you want to find out a or whatever n or whatever d in a terms of a of n, we have to apply the same formula. A of n is equal to a plus n minus 1 into d. That formula we have to apply. So therefore a of n is equal to a plus n minus 1 into d. That is the general formula to find out the nth term.
So now a of n is equal to 0 is equal to value of a is given minus 18 plus n is given 10 minus 1 into d we have to find out, right? Now minus 18, that moving on the left hand side, that becomes plus 18, 10 minus 1 9 into d 9d. So therefore d is equal to 18 upon 9. So this common difference d is equal to what? 2. Then you can easily find the value of d is equal to 2, right? Like slightly one example I'll taking, third one. Now in that third one question, I'll have to find out the value of n. See that a is given, d is given, a of n is given. Now we have to find out the n. Okay, first question I'll find the value of a of n. Second question I'll find the value of d, common difference. Third question that I'll find out the value of n. Now in which a, d and a of n is given minus 18.9. Minus 18.9. The value of a is what? Minus 18.9. Now d is equal to what? 2.5. D is equal to what? 2.5. N. A of n is given 3.6. A of n is given what? 3.6. So a of n is equal to 3.6. Now I'll find out the value of n. n मुझे find out करना है. So if you want to find out the value of n, हमें सेम ही फॉर्मूला यूज़ करना होगा. a of n is equal to a plus n minus 1 into d. उसी इक्वेशन का यूज़ करके हमें सॉल्व करना है. चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a of n is equal to a plus n minus 1 into d. a of n is equal to a plus n minus 1 into d. a of n की वैल्यू हमारे पास है 3.6 is equal to a minus 18.9 plus n minus 1 into d 2.5, right? Value of d is what? 2.5. पहले तो 18.9 जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड मूव करो तो प्लस हो जाएगा. सो 3.6 प्लस 18.9. नाउ this value of 2.5 in a form of multiplication to right hand side, that moving on a left hand side, that is divided by 2.5 is equal to n minus 1, right? Now 18.9 plus 3.6, that is what? That is 22.5. okay, so therefore 22.5 divided by 2.5 is equal to n minus 1. Now when you divide 22.5 divided by 2.5, that will what? 9. 9 2s are 18, 9 5s are 45, 22.5. So I'll write here n minus 1 is equal to 9. So n equal to 9 plus 1. So n equal to 10. We'll get the value of n is equal to 10. Clear? How we can find the values? So generally in terms of equation a of n, अगर उसमें a की वैल्यू ना दी हो, d की वैल्यू ना दी हो, n की वैल्यू ना दी हो, a of n ना दिया हो, तो by applying this formula a of n is equal to a plus n minus 1 into d, we can easily find the equations, right? Now it is a very easy form. Let's move on to the next question. Next questions में हमें दिया होगा कि अलग अलग टर्म्स दिए होंगे, उस टर्म्स में हमें 30 टर्म जो होगा 30 टर्म्स नंबर का वो हमें फाइंड आउट करना होगा, या अलग अलग फॉर्मेशंस के हिसाब से वो फाइंड करना है कि 30 टर्म क्या होगा, 50 टर्म क्या होगा, माइनस का टर्म क्या होगा, वैसे हम फाइंड आउट करते हैं. लेट वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. इन आवर टेक्स्ट बुक लेट वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू सी दैट आई विल राइट a sequence here. First find 30th term of AP. देखो हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 30th टर्म फाइंड करना है, जिसमें 10 7 4 अप टू इन्फिनाइट ऐसा दिया है, राइट? So we have to find out the 30th term from the arithmetic progression of sequences 10 7 4 up to infinite, right? So अगर हमें कोई भी term find करना है, if you want to find out the term, it means a of n, okay?
सो ए ऑफ एन यानी कि एन की जगह पे कौन सा टर्म फाइंड करना है 30, यानी ए 30 टर्म हमें फाइंड करना है. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ए 30 टर्म यू हैव टू रिक्वायर द वैल्यू ऑफ ए, value of d and value of n, right? So a and d are the compulsory to find out the any forms of arithmetic progression. So if you see here, यहाँ पे हम लिखते हैं in given arithmetic progression in given AP 10 7 4, first term that is called a is equal to 10, first term that is called a is equal to 10. Now difference is equal to what? a2 minus a1. Difference is what? a2 minus a1, मतलब second term minus first term. So therefore 7 minus 10 is equal to minus 3. Value of d is what? Minus 3. And which term we have to find out? 30th term. So n equal to 30. N equal to 30. So we have all this value, n equal to 30, d equal to minus 3 and a equal to 10. Now we will apply the formula a of n is equal to a plus n minus 1 into d. A of n is equal to a plus n minus 1 into d, where n is equal to 30, a of 30 is equal to value of a is 10 plus 30 minus 1 into value of d is what? Minus 3. Value of d is what? Minus 3. So therefore 10 plus 30 minus 1 29 into minus 3. Okay, now 29 into minus 3, that is what? 87, because 30 is into 3, so 10 minus 87. So a of 30 is equal to minus 77. So which is the 30th term is minus 77. So by applying this type of methods you can easily find the numbers which having in a form of arithmetic progression. Now similarly I'll quote another example like that. Okay, minus 3, 1/2, 2, etc. and we have to find 11th term. Second question, find 11th term. Find 11th terms of an AP is. Now the arithmetic progression that you have to write at minus 3 by 2, minus 1/2, 2 like this, minus 3, minus 1 by 2 up to infinite, right? Also you have to mention that 2 is also be mentioned there, so 2 I'll write 2. Okay, so I'll find the 11th term of this arithmetic progression. So before that find out, we need to be find the value of a and value of d. That two still require. So first term that is written a is equal to minus 3. The value of a is equal to minus 3. N is equal to 11. 11th term it means n is equal to 11. Then we have to find out the value of d. D is equal to a2 minus a1. So a2 is what? Minus 1 by 2 minus minus plus 3 by 1. 2 and 1 LCM is 2, minus 1 plus 6, that is 5 by 2. Value of d is what? 5 by 2. We'll get d is equal to what? 5 by 2. Now if we have to be solve these values, so we have to formula a of n is equal to a plus n minus 1 into d. A of n is equal to a plus n minus 1 into d. By using that formula we have to find the value. So I'll write here now a of n is equal to a plus n minus 1 into d. Now value of n is what? 11. So I'll apply here a of 11 is equal to minus 3 plus 11 minus 1 into value of d is what? 5 by 2. Value of d is 5 by 2, right? So therefore minus 3 minus 11 plus 1 10 into 5 by 2, 10 into 5 by 2, right? So 10 5 is a 50,
50/2 is what? 25. 25 is there. So therefore -3 plus 50/2. So therefore -3 plus 25 is equal to 22. So 11th term of this arithmetic progression will be what? 22. So it is very easy. If you want to find out the particular terms which having a specific value of a and d, by using this formula you can easily find the arithmetic progression, right? So let me move to another example how it can be solved. It is a part of the missing terms in the boxes. Now find the missing term. This type of question will solve one or two question. Find the missing term. How we can find the missing terms? That will move on to another question. Next is find missing terms. So I'll using the one example how we can find the missing term. Find missing term. Find missing term. Okay, we have to find the missing term, in which I'll take one example. 2 bracket 26. First 2 comma 26, right? This type of questions. Now this question generally we have to solve into the arithmetic progression. That generally we have to solve into the form of arithmetic progression. So first of all, here is the three terms. Term 1, term 2 and term 3. Three terms are there. So first term will be 2, second term that we have to find out, and third term that should be given 26, right? So how we can be find? So if you have to find out this second term, we require d, क्योंकि फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं a, सेकेंड टर्म को कहते हैं a प्लस डी, और थर्ड टर्म को हम क्या कहते हैं a प्लस 2d, फोर्थ टर्म को कहते हैं a प्लस 3d. ऐसे सारे सीक्वेंसेस मूव करते हैं. तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखते हैं हियर. फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2. ओके, सेकेंड टर्म मेरा मिसिंग है, थर्ड टर्म मेरे को दिया है 26. a ऑफ 3 इज इक्वल टू 26, राइट? सो a ऑफ 3 इट मीन्स व्हाट? n की वैल्यू क्या हो गया आपके पास? 3. a ऑफ 3 मतलब क्या? n इज इक्वल टू 3. सो आई अप्लाई हियर फॉर्मूला a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इंस्टेड ऑफ n मुझे क्या लिखना है? 3 लिखना है. सो a ऑफ 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू आपको d फाइंड करना है. a ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास है 26. 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2d, राइट? 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d. सो 24 इज इक्वल टू 2d. सो d इज इक्वल टू 12. d की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 12. यू विल गेट वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 12. तो हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है. तो नाउ सेकेंड टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है, a2 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? a प्लस डी. सेकेंड टर्म को हम क्या लिखेंगे? a प्लस डी. सो देयरफॉर a की वैल्यू हमारे पास है 2 और d हमारे पास कितना आया? 12. तो सेकेंड टर्म मुझे कितना मिलेगा? 14. तो सेकेंड टर्म मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट शुड बी अ 14. सेकेंड टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ऐसे मिसिंग टर्म को फाइंड कर सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन जो मिसिंग टर्म्स के फॉर्म में दिए हो, आप उसको इस तरह अप्लाई करके भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? तो मिसिंग टर्म्स भी दिया हो तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपको समझ में आए थोड़ा सा. ये ब्लैंक लेते हैं, फिर 13 लेता हूँ, फिर ब्लैंक लेता हूँ, फिर 3 लेता हूँ. ठीक है? सेकेंड क्वेश्चंस में ब्लैंक, 13, ब्लैंक और 3 ऐसा हम इक्वेशंस को यूज़ करते हैं. अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग टर्म्स दिए हैं आपको. सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म, ऐसे दो अलग अलग टर्म्स दिए हैं आपको. अगर आप देखेंगे तो सेकंड टर्म्स जो है a ऑफ 2 दैट इज 13 और a ऑफ 4 दैट इज 3. दीज आर टू इक्वेशंस आर देयर, सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म. उस पर से मुझे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ऐसे इक्वेशंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का ही यूज़ करते हैं, और दो इक्वेशन जो बनेगा वो दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करके सब्स्टिट्यूट करके a और d की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हियर a2 इक्वल टू 13
and A4 equal to 3, right? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म 13, फोर्थ टर्म है हमारा 3. सो देयरफॉर A ऑफ 2 अगर मुझे लिखना है तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. A ऑफ 2 मेरे पास क्या है 13 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस डी 13. इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. उसी तरह A4 के लिए अप्लाई कीजिए. A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. A4 की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, राइट? A प्लस 3D इक्वल टू 3, A प्लस D इज इक्वल टू 1. ये दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूट करें. दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी. सब्स्टिट्यूट बोथ इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट बोथ इक्वेशन. दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूट करिए तो A प्लस 3D और A प्लस D है, तो 3D में से एक D जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 2D रहेगा, और 3 में से 13 जाएगा तो माइनस 10 रहेगा. सो माइनस 10 इज इक्वल टू 2D. सो देयरफॉर D इज इक्वल टू माइनस 5. D की वैल्यू क्या मिलेगी आपको माइनस 5. अभी D की वैल्यू माइनस 5 है. अभी हमें क्या करना है, इस D की वैल्यू माइनस 5 इसमें रखेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, A की वैल्यू मिल जाएगी. सो इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करते हैं. D इक्वल टू माइनस 5 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1. तो यहाँ पे A माइनस 5 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा. A माइनस 5 इज इक्वल टू 13, राइट? सो A इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 18. A की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 18. यू गेट द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 18. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 18 मिलेगा. उसी तरह हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है. A ऑफ 3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D. A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है माइनस 5. सो 18 माइनस 10 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा. सो थर्ड टर्म हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा. तो ऐसे जो मिसिंग वैल्यूज़ है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं. तो क्लियर कि E ऑफ n का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है. तो आई होप कि अभी जो सेशंस यूज़ किया है जिसमें मिसिंग टर्म्स और A ऑफ 10 फाइंड करना है आपको समझ में आया होगा. सो स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है उसको एग्जाम्पल फॉर्म में या एक्सरसाइज फॉर्म में जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करते रहिए. विल मीट टुमारो विद अदर टॉपिक्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ.